Okay, now let us take the other form of the circle, which is known as the diametric form. Apart from the general form and the standard form that we have done, now we have to do this second topic, which is the diametric form. And this is a very shortcut method of finding the equation of the circle. So if x1, y1 and x2, y2 are the extremities of a diameter, that means they are endpoints of a diameter, then the equation of the circle can be written as x minus x1 into x minus x2. That is, these two product will be done plus y1 minus y2 into y minus y2 equal to 0, right? Again, formula, very important formula, just remember it simply. Okay, you have to just remember it. I'll show you how to apply them in tough questions right away, but this very important stuff, just remember it. But do not make the mistake of applying it for any 2 points on the circle. So remember, x1 y1 and x2 y2 have to be what? Diametrically opposite points, राइट. सो दे हैव टू बी डायमेट्रिकली अपोजिट. ऐसा भी दिया होता है आपको, तो घबराना नहीं है. तो इट इज डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स, और वी कैन से पॉइंट्स ऑन लाइंग एंड दी और एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर, in whichever form I can say, endpoints of diameter. So both of them are actually equal, right? They are saying the same thing. Do not use for any 2 points. Just keep that in mind. Okay, let's start with the question then. So it says if the abscissa and the coordinates of 2 points P and Q are the roots of the equations respectively, then find the equation of circle with P and Q as diameter, right? Let me just explain it to you with the help of a diagram. Okay, so let's say this is point is P and this point is Q. Let's say x1 y1 and this is x2 y2 and this is the center C, right? So it is given that P and Q are the roots of the equation and you have to find the equation of the circle with PQ and diameter. Now you got it. मैंने P और Q को diametrically opposite point ले लिया. तो अगर मेरे पास x1 और y1 और x2 और y2 की वैल्यू आ जाती तो मेरा आसानी से काम क्या हो जाता. इक्वेशन ऑफ सर्कल कुड बी रिटन एज x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0. सिंपली ऐसे लिख सकता था मैं, ठीक है. बट मुझे और क्या चीज गिवन है, लेट्स सी, लेट्स ट्राई एंड फाइंड आउट दैट फर्स्ट. आपको कहा जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 2ax माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 के रूट्स क्या क्या हैं बताओ. एब्सिसास ऑफ पी एंड क्यू आर रूट ऑफ दिस, ऑर्डिनेट्स आर रूट ऑफ दिस. सो एब्सिसास कौन कौन हुए, x1 एंड x2. So that means roots of this equation are given to be x1 and x2. तो रूट्स अगर हमें गिवन होते हैं तो हमें उससे क्या पता होता है, x1 प्लस x2 सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, माइनस b बाय कितना हो गया, यस माइनस 2a. एंड आई कैन सिमिलरली से x1 x2 कितना हो जाएगा, c बाय a दैट इज माइनस b स्क्वायर, राइट. सिमिलरली आई कैन डू फॉर द अदर इक्वेशन विच इज गिवन इन टर्म्स ऑफ, लेट्स ओके x के टर्म्स में गिवन है, कोई नहीं. सो x के टर्म्स में लिख लेते हैं. तो अगली इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2px minus q square equal to 0. Now the roots of these equations are actually, देखो, ordinates of p and q. So do not get confused sir, ये y में होना चाहिए था क्योंकि हम तो y निकाल रहे हैं. अरे भाई रूट्स हैं, रूट्स किसी भी फॉर्म में, उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, राइट. सो इस बार क्या हो जाएगा, रूट्स आर y1 and y2, सम ऑफ रूट्स विल बी राइट माइनस 2p and y1 y2 विल बिकम व्हाट, यस एब्सोल्युटली माइनस q स्क्वायर. सो हमें चार चीजें पता हैं, कौन कौन सी, आई एम जस्ट हाईलाइटिंग इट फॉर यू. x1 प्लस x2 पता है, y1 प्लस y2 पता है, x1 x2 पता है और y1 y2 पता है. अब लोगों का दिमाग कहाँ चल रहा है सर, हमें तो पर निकालना क्या है, व्हाट वी आर आस्क्ड टू फाइंड इज, हमें तो चाहिए x1 y1 x2 y2 की वैल्यूज. पॉइंट इज वी डू नॉट रिक्वायर इन दिस क्वेश्चन, वी डू नॉट रिक्वायर टू फाइंड देयर वैल्यूज, टू फाइंड वैल्यूज ऑफ x1 एंड x1 x2 y1 y2. देखो हम उसके बिना ही काम करेंगे, ठीक है, नहीं तो ये तो बहुत बहुत लंबा क्वेश्चन बन जाएगा. ठीक है, देखो मैं यहां से वापस कंटिन्यू करता हूं. सो इफ आई जस्ट एक्सपैंड दिस इक्वेशन तो ये क्या बनेगी, देखो एक्स स्क्वायर, अगर तुम ढंग से करो, आई एम डूइंग अ डायरेक्ट स्टेप, ये आना चाहिए, नोटिस करो. दिख गया तुम्हें कि हमें निकालने की जरूरत ही नहीं, ये स्टेप करने की हमें जरूरत नहीं. सिमिलरली अगर आप आगे वाले को एक्सपैंड करते हो क्या बनता है, वाई स्क्वायर माइनस कॉमन लो y1 प्लस y2 राइट टाइम्स y प्लस y1 y2.
अगेन वी डू नॉट रिक्वायर एनी वैल्यू ऑफ y1 y2, बस अब तो सीधा क्या करना है, ये देखो सारी वैल्यूज पुट करो यहाँ पर, ये वैल्यू हमें पता है, तो ये कितना हो गया, माइनस माइनस हट के 2ax, x1 x2 कितना है भाई, माइनस बी स्क्वायर, सो माइनस बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर आ गया, माइनस वाई वन वाई टू कितना, वाई वन प्लस वाई टू कितना हो गया, यस प्लस 2py, और ये कितना हो गया, माइनस q square. That's it, question over. So the equation of the circle we were asked to find is simply this. इसमें हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, x1 y1 x2 y2 निकालने की नीड नहीं है, we do not require them. So this is the particular answer we were asked to find. Right? This is how we solve questions using diametric form. Okay, let's take another problem to make sure that we are solid in this particular concept. Okay, so the next question says find the locus of centers of the circle for which one end of the diameter is, so one end of the diameter is 1 comma 1, right, and the other end is on x plus y. So now the other end lies on the line, right? Let me show you with the diagram. Okay, so now this is what is meant by the question. So question कहता है आपको एक पॉइंट तो दे रखा है 1 comma 1 ये वाला, आपको दूसरा ये वाला पॉइंट नहीं दे रखा है, आपको लाइन दे रखी है जिसके ऊपर वो लाई करता है x प्लस वाई इक्वल टू 3 के ऊपर. हमसे पूछा क्या जा रहा है फिर से, सो टू मेक you a bit uncomfortable, I have again taken locus. So locus देखते you become uncomfortable. I know that you people become uncomfortable. That is the reason I am taking again locus. So again, so what I taught you in locus, जिस point को लेना है, so let's say C, so let's assume C be H comma K. Right, first step. मेरा टारगेट क्या है, मुझे C H comma K के अंदर क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन इन H and K. This is my सेकेंड टारगेट. अब वो देखो मैं कैसे करूंगा. यू आर गिवन दैट द अदर पॉइंट लाइज ऑन दिस पर्टिकुलर लाइन, राइट? ओके, अच्छा चलो हमें सी पता है एच कॉमा के, लेट्स से मैं ये कह लेता हूं ये मेरा पॉइंट है x1 y1, राइट? सो आई कैन से सी इज कैन आई से मिड पॉइंट ऑफ 1 comma 1 एंड x1 y1, राइट? कह सकता हूं, ठीक है. तो अब देखो इससे क्या मिल गया मुझे, C में H इज इक्वल टू 1 प्लस x1 बाय 2 एंड K इज नथिंग बट 1 प्लस y1 बाय 2, राइट? ठीक है. और मुझे इस चीज में क्या पता है, x1 y1 लाइज ऑन विच लाइन, x प्लस y इज इक्वल टू 3. So that means this should satisfy this line. That means I can say x1 plus y1 is equal to 3. पर क्या हमें x1 y1 चाहिए? Do we require x1 y1 in the answer? Not obviously, because I have generated x1 y1. It was not given in the question. So now whole target then becomes to convert the value of x1 and y1 in terms of h and k and put it here. So I can say from here, from this particular step, if I write here that x1 is nothing but 2h minus 1 and y1 is nothing but 2k minus 1, right? Now you substitute the values here. So this becomes 2h minus 1 plus 2k minus 1 is equal to 3. Now you are getting hold of it, what I am talking about? Yes, so this is the answer. So now we have got an equation. That means second step is clear. Equation in terms of h and y, h and k, which is completely independent of the variables. So the answer is nothing but by replacing h and k with x, you get the answer. So this is the answer we are looking for. So this is the answer. That's it. Got it? Okay, now let us take another problem which at the onset does not seems like a diametric form question. Let me read out it for you. You have to find the equation of the circle passing through origin, cutting off intercepts each equal to plus 5 units on the axis, right? Let me show you what does this mean by the help of a diagram. Okay, something of this type is given to you now, that the circle passes through the origin, so this is the O point, and it leaves an intercept of 5 units on both x-axis and y-axis. Don't worry if you are not clear of intercepts, I'll talk about the intercepts in the later half. All right, so now you need to find the equation of these kind of circles.
So the students who have actually done special cases of circles, they try and do this question by using special cases. But why I have taken this particular question in the diametric form, because you do not have to apply even special cases here. Let's see how we solve this. Now can you tell me that if these are the x's, so this angle would be 90 degree, right? And if I join these points, okay, just mind the diagram, so I might not be drawing a very clear line, right? Yeah. So let's say point is A and this point is B. So triangle OAB, what is triangle OAB? Right angle triangle, right? It is a right angle triangle. And we know when this happen in a circle, when this is a semicircle, or I can say this implies AB is a diameter. तभी ये possible है भाई, right? Angle in a circle 90 degree हो जाए तो ये कब possible है? When AB is a diameter. You know already this is given to be 5 units, so this point becomes 5,0, और ये वाला y axis पे कितना यूनिट्स बना रहा है? 5 यूनिट्स, तो ये पॉइंट क्या हो गया? 0,5. Now you know the diametrically opposite points. Question over. So this is nothing but x minus 5 into इसका क्या है? 0. So this is x minus 0 plus y minus 0 into y minus 5 equal to 0. Question over. That's the beauty of this particular question. So x square plus y square minus 5x minus 5y equal to 0 is our answer. You can see that this is in the C part. This is our answer. Question over. That simple this problem was. Okay.